हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आई एम डॉक्टर सुनीता टंडन फ्रॉम आर कॉलेज अलवर and today I am going to start with the lecture number is I think 8, that is nitrogen cycle. In the last lecture yesterday we have studied about the biogeochemical cycles in the environment, and we have studied the oxygen cycle and carbon cycle in this reference. Today we are going to study the another cycle of our another cycle of our course, that is nitrogen cycle. Nitrogen cycle, one of the nature's most vital dynamic cycle, operates through continuous exchange of nitrogen within the ecosystem. Cyclic process, you very clearly known cyclic process is when we start with one compound and then ultimately with a lot of involvement of ecosystem, plants, animals, and we return to the same place. That is a cyclic process. Then so we can say that nitrogen cycle, one of the nature's most vital cycle, dynamic cycle. It operates through continuous exchange of nitrogen within the ecosystem. The atmospheric nitrogen is converted into its compounds, and combined nitrogen again passes back to the atmosphere. Nitrogen and its compounds, for example, proteins, amino acids, vitamins, nucleic acids, enzymes, and alkaloids, etc., are essential for the maintenance of life processes in the biosphere. Today, nitrogen atom may be throbbing in the cell of meadow gases. Tomorrow, it may be pulsating through the tissue of a living animal. This is showing the cyclic process. One time it is you can get it from the cells of meadow grass, and tomorrow you will get it pulsating in the tissue of living organism, from grass to animals. This is a cyclic process. The nitrogen atom may rise from decaying animal refuses and stream to an atmosphere, where it may be yoked with oxygen in a flash of lightning and return to plant food, that is in form of nitrate ion NO3 minus, to the soil in a torrent or rain, or it may be directly absorbed from the atmosphere by the soil and there rendered available for plant food by the action of symbiotic bacteria. Symbiosis means with the help of one another, they help each other. Thus, each nitrogen has undergone a never ceasing cycle of reactions through countless actions of time. Now, we will study nitrogen fixation. Nitrogen is the main constituent, 79% of the atmosphere, but it cannot be absorbed directly by most forms of life. Nitrogen is present in 79% in the atmosphere, but it cannot be absorbed directly by most forms of life. Animals, plants, they directly cannot absorb nitrogen. It must be fixed before it can be utilized by the plants and animals. Nitrogen fixation is of two types. Nitrogen fixation of two types. The first type is nitrogen fixation by physiochemical reactions. This is due to thunderstorms in rainy seasons. Nitrogen and oxygen of air combine with each other. Nitrogen reacts with oxygen to form nitric oxide 2NO, as you can see in the reactions. Then 2NO react with oxygen to form 2NO2. Then 4NO2 combine with water and oxygen to form nitric acid, 4 molecules of nitric acid. Nitric acid or acid rain, it comes to the earth and combines with basic components in the soil to form nitrates, which are the basic food of the plants in the soil. Nitric acid combines with ammonia to form ammonium nitrate. Nitric acid combines with calcium oxide to form calcium nitrate and water. Second type of cycle is nitrogen fixation or nitrogen transformation by bacteria. Nitrogen cycle, the microorganism mediate cycle, is based of 4 major chemical transformations. First है nitrogen fixation, where the molecular nitrogen is fixed as organic nitrogen
by Rhizobium bacteria. Rhizobium is a kind of bacteria which are found in the roots of legumes, leguminous plants like जैसे आप मटर है, राजमा है, जितने भी ये लेग्यूम्स हैं जो कि क्या कहते हैं हम मटर की कैटेगरी के जो प्लांट्स हैं, दालें हैं, इनकी रूट्स में पाया जाता है लेग्यूम राइजोबियम बैक्टीरिया। अगर आप इनकी किसी की रूट को निकाल के देखेंगे तो उसमें नोड्यूल्स दिखाई देंगे, वो जो नोड्यूल्स हैं उनमें ही ये राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं। Then in such a case, when nitrogen fixation, where molecular nitrogen is fixed as organic nitrogen by rhizobium, 3 molecule of CH2O reacts with 2NO plus 3 water plus 4H ions and form 3 carbon dioxide plus 4 ammonia molecules. Second process है nitrification, which is the process of oxidizing ammonia to NO3 ions by Nitrosomonas and Nitrobacter. Here two other bacter, Nitrosomonas and Nitrobacter, they change ammonia to the nitrate ion. The ammonia molecule react with 3/2 oxygen. You can see this in the PDF reaction, and it gives H ion plus NO2 ions plus water. These NO2 ions, nitrite ions, then react with half oxygen to form nitrate. In this way, ammonia is converted into nitrate. Third type of process is nitrate reduction to nitrite ion. In this case, half molecule of nitrate ion combined with 1/4 molecule of CH2O and is converted to half molecules of nitrite. Nitrate is changing into nitrite plus 1/4 water plus 1/4 carbon dioxide. And fourth step, in all the 3 steps, nitrogen is fixing in the soil. And the fourth is denitrification. Denitrification, which involves reduction of NO3 negative ion, NO2 negative ion, followed by recycling of nitrogen to the atmosphere. In the first 3 steps, nitrogen is fixed to the soil, and in this process nitrogen in some form is returned to the atmosphere. Some soil microorganisms transform nitrogen into soluble nitrogen compounds at a rate of 0.1 tons per hectare per year. In the total cycle, about 4 to 7 tons of nitrogen is added to the soil each year. Man has interfered with this natural cycle by industrially fixing nitrogen. Modern agriculture practices dump about 40 million tons of nitrogenous fertilizers each year to the world's cultivated land. Freshwater resources, namely rivers, lakes, streams, and polluted by agriculture runoff, that is leaching of excessive nitrogen from agriculture land. It means कि जो फर्टिलाइजर्स यूरिया या नाइट्रोजन के डाले जाते हैं सॉइल के अंदर, जितना चाहिए उतना कंज्यूम हो जाता है, बाकी एक्स्ट्रा पानी के साथ में रिवर, लेक्स और इनमें चले जाते हैं, है ना. दैट इज़ लीचिंग ऑफ एक्सेसिव नाइट्रोजन. ये एक्सेसिव नाइट्रोजन है, ये एग्रीकल्चर लैंड से वाटर बॉडीज़ में चली जाती है. This increases the runoff has also contributed to the process of eutrophication. और ये जो increase नाइट्रोजन का जो प्रोसेस है ये न्यूट्रिफिकेशन को जन्म देता है. अब आप आइए इस तरफ जहाँ पर नाइट्रोजन साइकिल बनी हुई है. इसमें देखिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है. ये फर्स्ट प्रोसेस इलेक्ट्रोकेमिकल एंड फोटोकेमिकल फिक्सेशन से, दूसरे प्रोसेस नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म से, तीसरा इंडस्ट्रियल फिक्सेशन से. इन तीनों प्रोसेस से ये नाइट्रोजन जो है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है, नाइट्रेट में बदल जाती है, नाइट्रेट में बदल गई. ये नाइट्रेट जो है ये बाद में डीनाइट्रीफाइंग, ये नाइट्रेशन फिक्सेशन हो गया अर्थ में, अब डीनाइट्रिफिकेशन होगा. डीनाइट्रिफिकेशन से ये नाइट्रेट जो फिक्स हुई है ये N2 में बदल जाती है और वापस एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन के फॉर्म में चली जाती है. सिमिलरली अब अगर नीचे की तरफ देखें तो नाइट्रेट जो है ये नाइट्रेट आयन एसिमिलेशन होता है.
नाइट्रेट का एसिमुलेशन होता है, फूड होता है, प्लांट्स खाते हैं, एसिमुलेट करते हैं, उसको प्रोड्यूसर्स जो हैं कंज्यूम करते हैं। जो कंज्यूमर्स जो होते हैं वो हर्बीवोरस भी हो सकते हैं। और ये जो हैं जब डिके होता है इनका, प्रोड्यूसर्स का और कंज्यूमर्स का, तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं और डिकम्पोज होकर के अमीनो एसिड, यूरिया, ऑर्गेनिक रेजिड्यूज़ की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। सिमिलरली कंज्यूमर्स भी इनमें ही कन्वर्ट होते हैं और फिर अमोनीफाइंग बैक्टीरिया जो हैं वो इनको अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। अमोनिया में कन्वर्ट होने के बाद ये नाइट्राइट बैक्टीरिया अमोनिया से NO2 बनाते हैं, NO2 से NO3 बनाते हैं नाइट्रेट बैक्टीरिया, एंड अगेन दे आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट। सिमिलरली अमोनिया जो है नाइट्रेट जो है अमोनिया में कन्वर्ट होता है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया से, और इस तरह से ये साइकिल पूरी होती है। कुछ में अमोनिया एब्जॉर्ब की जाती है, नाइट्रोजन एब्जॉर्ब की जाती है, और कुछ में वो रिसाइकिल होकर के वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। इस तरह से नाइट्रोजन साइकिल अपना साइक्लिक प्रोसेस कंप्लीट करती है इन अर्थ। Hope you will understand the topic, and we will discuss the phosphorus cycle next time.